So students, now we are going to solve question number 6 of exercise number 4.2. In this question, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. एक दिन में cottage industry ने कुछ articles बनाए. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was rupees 3 more than twice the number of articles produced on that day. ठीक है? If the total cost of production on that day was rupees 90, then find the number of articles produced and cost of each article. एक जनरल अगर मैं बात करूं, सपोज x आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए और उनकी कॉस्ट y है, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया xy. टोटल प्रोडक्शन का मतलब है कि टोटल कितना उस दिन का अमाउंट निकला, दैट इज xy. इतने आर्टिकल इतना रुपीज़ के हिसाब से टोटल अमाउंट इतना. ठीक है, ये समझ में है. यही केस इसमें हम अप्लाई करेंगे. हाउ वी अप्लाई हियर? वी विल टेक लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, let the number of article produced on that day be x and the cost of each article and the cost of each article be rupees कितना? 3 more than twice the number of articles. 3 more than twice the number of articles. 3 more than twice the number of articles. समझ आ रहा? नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस में 3 ऐड करने से जितना बनेगा उतना रुपीस. ठीक है. सो व्हाट इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? सो total cost of production is equal to what is given is rupees 90, is rupees 90. Therefore, according to question, x into 3 plus 2x is equal to 90. ये होना चाहिए. 3x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 90 और 2x स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. समझ आ रहा? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. नाउ अगेन वी आर आवर टास्क इज टू स्प्लिट द मिडिल टर्म. कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे? यहाँ 3 आना चाहिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए? 90 इंटू 2, that is 180 minus 180. So we can write here 2x square plus 15x minus 12x minus 90 is equal to 0. 15 into 12, that is 180, and 15 minus 12, that is 3. Clear? Now here we will take common x. So what is remaining? 2x plus 15, and here minus 6 common. 2x plus 15 is equal to 0. Clear? 2x plus 15 and x minus 6 is equal to 0. Two brackets or product of two brackets is equal to 0. Then when 2x plus 15 is equal to 0, this implies x is equal to minus 15 upon 2. Here, and when x minus 6 is equal to 0, this implies x is equal to 6. Listen students, हमने x क्या लिया था? We have taken x as the number of articles produced. So number of articles cannot be negative. We will write here, since number of articles cannot
be negative. Therefore, actual number of articles is equal to 6. Clear? And okay, we have to find the number of articles produced and the cost of each article, and cost of each article is equal to 3 plus 2 into 6. 3 plus 2 into 6, that is 12 plus 3, 15 rupees 15. Clear? So in this way we have to solve this question. Here we end exercise number 4.2. Now we proceed to the next topic. So till that, pause the video to be noted down.